Hello everyone, good afternoon. We are waiting for some more followers to join us on our live, then we'll start. So this week's or today's live topic, Instagram live topic is on homebound happiness, mental health boosters for summers. So before get into the main session, let first थोड़ा बहुत interaction करते हैं. कैसे हैं सब? How is your summer break or summer vacations are going on? And what what are your feelings and what are you thinking about this current weather of Delhi? I hope I'm audible to everyone. So how's the weather in Mumbai? Considering weather, Delhi, Gurgaon बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है. The summer break or summer vacations are not feeling a vacation. And considering this, we have choose this topic of today's live, that is homebound happiness, mental health boosters for summers. The temperature is so high and itni ज़्यादा गर्मी, so it is almost difficult, and if I don't know if it is right to say or not, but next to impossible कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते हैं. इतनी धूप होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी. इट इज़ नॉट एट ऑल comforting and even convenient to go outside. So can we start with the session?
We are just waiting few more people to join us. Okay, so hello everyone. I am Shweta, a psychologist in UVCT, Urvi Vikram Charitable Trust, which is in Dwarka, Sector 22, in Delhi. So every week we are coming live on our Instagram page, as you have know already, on every Saturday, almost around this time 4:30. And for today's live, yes. So for today's live, we are talk about on topic how we can boost our mental health in this tempting weather, in इतनी ज़्यादा गर्मी में, इतने ज़्यादा hot temperature में, how can we take care of our mental health? So either we are at home, or by our choice or by circumstances, for example the temperature, considering this weather, we are bound to stay at home, right? What do you think about it? Either bound to stay at home or to just leave the city, पहाड़ों पे जाना है, mountains पे जाना है. Considering this also, in news daily I'm seeing this news, माउंटेन्स पे कितना रश, इतनी भीड़. इवन जो व्लॉगर्स हैं, यूजुअली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दे आर मेकिंग दीज स्पेसिफिक वीडियोज और रील्स रिक्वेस्टिंग that don't come in this weather, it is too crowded and too rush here. So considering everything, what can we do to maintain our mental health in this summer? As you all know, it is necessary. Either we are home by choice or by circumstances, to get fit mentally and physically is absolutely necessary. So let's get started. Firstly, why mental health is important for our well-being? Well, I know ये question बहुत ही ज़्यादा अब नॉर्मल हम बोल सकते हैं हो चुका है, क्योंकि हम काफ़ी बार और काफ़ी सारे सेटअप्स पे ये क्वेश्चंस हम अक्सर सुनते हैं, स्पेशली उन सेटअप्स पे जहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट इट. तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा यही होता है कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है एंड व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ एक्चुअली. सो पर्सनली आई डोंट थिंक कि कोई अभी अवेयर होगा ही नहीं इस टर्म से भी, और rarely there are people or there will be any individual who are not aware of this term mental health and why it is important to maintain our mental well-being. So usually when we ask what is mental health and why it is important to stay fit mentally or to maintain your mental well-being, we usually compare it with our physical fitness or physical wellness. कि
सॉरी फॉर एग्जाम्पल कि फिजिकली फिट रखना अपने आप को ज़रूरी है, और उतना ही ज़रूरी आपको मेंटली अपने आप को फिट रखना, मेंटल वेलबींग को अपनी ठीक रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना फिजिकल वेलबींग को रखना है। वी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम एक ये कंपैरिजन ड्रॉ करते आए हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग कि फिजिकल फिटनेस तो ज़रूरी है ही, बट मेंटल वेलनेस भी ज़रूरी है। बट अगर अब हम देखें आज के टाइम पर, देर इज नो कंपैरिजन, these both terms, these both aspects of your fitness, your wellness, your life goes parallelly, hand in hand. If you are fit physically, you are able to maintain your mental wellness, and if you are fit or you are well mentally, then you are able to maintain your physical wellness, physical fitness. So there is no comparison in between कि हम physical fitness को अच्छा तो रखते हैं इसलिए हम mental wellness को भी ज़रूरी है रखना अच्छा। I am saying this कि अगर आप physically fit हैं, आप अपने आप को mental fit रख पा रहे हैं, रख सकते हैं, एंड इफ अगर आप mentally fit है देन आप physically भी अपने आप को fit रखेंगे। So these both part of your fitness, these are interrelated, these are correlated. हमारे इनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, ये दोनों आपस में पैरेलली साथ साथ चलते हैं। इफ दिस इज देयर देन दिस इज देयर काइंड ऑफ थिंग। सो कुछ चीजें होती हैं जो हमारी वेलनेस को इम्पैक्ट करती हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। उनमें से सबसे बड़ा एक जो सबसे मेजर एंड सबसे प्रायर जो हमारे पास पॉइंट निकल कर आता है, दैट इज आर environment, our surrounding. And if we are talking, if we are saying our environment, our surrounding, then obviously it includes, it contains our weather, atmosphere also. So psychology में एक term होता है, एक SAD, SAD, seasonal affective disorder. We used to call it seasonal affective disorder. SAD is the short form for that. So what if layman terms में if I'm saying if I'm telling you what SAD is, so seasonal affective disorder is seasons के साथ में weather जो change होते हैं उसके साथ कुछ individuals they are not feeling good. For example, in winters ये चीज yes in winters यूजुअली आप बहुत ही लो इन एनर्जी, डाउन इन एनर्जी आप फील करते हैं, बिकॉज सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, वी प्रेफर टू स्टे वार्म, सो इसलिए एनर्जी भी हमारी थोड़ी सी डाउन रहती है। सो अकॉर्डिंग टू स्टडीज ये चीज़ अकॉर्डिंग टू स्टडीज ये चीज हमारी ऑन रिकॉर्ड इट इज मेंशन्ड दैट इन विंटर्स जो डिप्रेशन केसेस हैं दे आर यूजुअली रेज्ड, वो इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सच रीजन, सच फैक्टर्स विच आई मेंशन्ड जस्ट राइट नाउ कि सनलाइट नहीं होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी लोगों में ज़्यादा आती है, आप थोड़ा यस डे लाइट थोड़ी कम हमको मिलती है, वी यूज टू प्रेफर वार्म बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली टेम्परेचर कम है, इसलिए हम थोड़ा एक्टिव भी कम होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स सो इट इज मेंशन कि जो डिप्रेशन के केसेस हैं दे बिकम increased in winters. Similarly in summers में हमारी क्या चीज़ें जो हैं वो थोड़े से सिम्टम्स हमारे इंक्रीज होते हैं इफ़ वी आर नॉट फीलिंग राइट इमोशनली और साइकोलॉजिकली। फॉर एग्जाम्पल इरिटेबिलिटी गॉट इंक्रीज्ड,
people used to feel more anxious in summers. Why? Because of the temperature, because of the weather only. So जब weather and season हमारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और हमारे इमोशनल एस्पेक्ट्स को एक्चुअली अफेक्ट करते हैं, एंड उसकी थ्रू इफ वी टेंड टू डेवलप एनी डिसऑर्डर, वी पुट इट इन अ कैटेगरी ऑफ सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर. जो सर्दियों में यूजुअली डिप्रेशन और लो मूड जो डिसऑर्डर्स हमारे होते हैं, दे गॉट इंक्रीज्ड, जो आपके मूड को लो कर देते हैं. एंड इन समर्स एंग्जाइटी रिलेटेड, इरिटेबिलिटी, बहुत फटीग, दिस गॉट इंक्रीज्ड in summers. And because in 2024 the heat temperature is so high, and how it is affect our mental health, we are going to talk about on this today on today live. It is also mentioned in one of the research by American Psychological Association, which states that ki maintaining good mental health, which I am just saying before, that there is no comparison between physical health and mental health. They go hand in hand, they are linked, they are associated with each other. And it is also stated by American Psychological Association also that good mental health can lead to a better physical health and vice versa. Because obviously if physically we got active, हम अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेके आते हैं, it will regulate certain hormones in our body which will ultimately impact our mood. And if our mood, if our emotions, those hormones which are regulating our emotions, they ultimately leading to our certain hormones, which will help us to lead in better physical movement. So considering this, I am going to share some tips regarding how you can maintain your mental health or boost your mental health in summers or in summer break, as बहुत ज़्यादा गर्मी है in this year. The temperature is so high, and we are, even if we are so willing to go outside or on trips or outside the country, but we are bound to stay home. So what all we can do, what all individually I can do to maintain our mental health or to make myself feel more good, even if मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकती हूँ अभी, या फिर मैं ज़्यादा खेलने नहीं जा सकती हूँ अभी. दिस इज स्पेशली फॉर दी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, बिकॉज एक समर ब्रेक ही एक लॉन्ग एक्सटेंडेड ब्रेक दे हैव गॉट, जहाँ पर उनको सारी चीज़ें करनी है. बाहर जाना है, दोस्तों के साथ भी निकलना है, नानी के घर भी जाना है, सारी चीज़ें करनी है. But if I'm asking you this, अभी चल क्या रहा है? Are you going outside to play or you get homebound? Usually it happens actually
On our time what usually happen is कि सुबह होती थी and what I remember from my school time is कि गर्मियों की छुट्टी होते ही सुबह होती थी and we just went out. We just play पूरा दिन खेलने में, hardly we get home back and have something to eat or to drink. जैसे ही फटाफट कुछ खाया and we again ran outside to just play. But what I'm seeing today is even subah 8 o'clock be I'm saying only at 7 and 7:30 it is very hot outside, and then it remains the same till 7 in the evening or 6:30 maybe. I mean what used to happen at our time कि जो आफ्टरनून टाइम होता था, बिकॉज ऑल आवर पेरेंट्स, पापा बाहर हैं जॉब पे और मम्मी का वो रेस्ट टाइम होता था, सो बच्चों के लिए वो एक बहुत लग्जरी टाइम रहता था टू हैव देयर टाइम. वो सिर्फ उनका एक बहुत ही गोल्डन पीरियड होता था कि देयर इज नो वन उनको इंटरप्ट करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को इंटरप्ट करने के लिए, उनको डांटने के लिए, बिकॉज सब रेस्ट करते थे उस टाइम पे. यस सर, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग्स में दे कैन गो आउट. We are actually going to talk about this. So here are some tips which I am going to share with you, or putting an insight on it to get your mental health boosters. So tip number 1 is stay physically active. Even if outside weather is not 6 a.m. Absolutely sir, 6 a.m. is the right time. 5:30 to 6:30 or 6 for any physical activity they can go for 6 a.m. and after 7:30 in the evening. 7:30 to 8:30 I feel will be the right time for the evening if we have not afternoon time. So stay physically active. Do not sit or be a potato couch on your summer vacations. Make yourself as much physical active or make a bodily movement. आप जितना कर पाओगे और आप जितना करते हैं, you will feel that it will boost your mental health or your emotions actually. So there is a research also from Harvard Medical School which shows that exercise can reduce symptoms of depression and anxiety, which I have stated earlier also. We have this trio in psychology. We studied it in CBT. So there are three very important parts, which is our emotion, behavior and our thoughts. So how it work is कि what we usually feel is what we usually behave, or our body adapts it in terms of movement or behavior and thought wise. And similarly what will be our behavior, हम जिस तरह से behave करते हैं, जिस तरह से हमारी body move करती है, उसी वही impact हमारे emotions and हमारे thoughts पर भी आता है. Same goes for thoughts. What we are
thinking is how we are feeling, and that is only how we used to behave through our body, through our actions. इसका बहुत एक easy example अगर मैं आपको लेकर बताऊं, so depression usually what happens is कि हमारी physical activity काफ़ी down होती है. Initially it impacts your mood. So through your mood you are not feeling good, you feel very low, very down, and जिस तरह से आप महसूस कर रहे हो, जिस तरह से आपके इमोशंस रेगुलेट कर रहे हैं, that is how you are going through your behaviors also. Then usually then gradually हमारी जो physical energy है वो भी हम डाउन काफ़ी महसूस करते हैं, एंड हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो भी हमारी धीरे धीरे काफ़ी कम होने लग जाती है. जो प्लेजर एक्टिविटीज़ वी यूज टू एंजॉय अर्लियर, we are not able to enjoy them. So it works like this, and similarly they impact our thoughts. So stay yourself physically active. If you are not if I'm not feeling कि मुझे ज़्यादा मूव नहीं करना, या अब रेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, which is not related to your energy intake, just आपको रेस्ट करना है, it will impact your mood in the same manner कि आपका मूड भी बहुत ही रेस्ट डाउन ही जाएगा. So that is why जो सबसे पहली चीज़ इन टिप्स और इन टेक्निक्स we recommend to people is please stay physically active. Second tip will be consistent routine. Maintain a routine. You have to have a consistent routine which you need to follow every day. There are actually, yes, I admit it कि few breaks and एक monotonous lifestyle से सभी we all need break. कि we are not robot, हम एक similar pattern में we are not going on cycle from A to B, B to A to A, B to A. But in terms to maintain, to provide your mental well-being a track to feel balanced, to feel motivated, to feel boosted, you have to have a consistent routine. Make a routine. Because what happen to have a consistent routine is you will feel, or that consistency or that routine will provide you a sense of stability, a sense of normalcy, which makes you feel that you are going on a structured track. जो feeling हम because what usually students में और 11th or 12th, not 12th, after 12th, because we have a different altogether life कि college में क्या करना है and everything. Then similarly after 10th, which streams we are going into. So बहुत एक distraction, एक deviation होता है, right? So to avoid that deviation or distraction, we need to be on a consistent routine in terms of have to be if I feel that I am liking certain activity or certain subject, for example, to study, so it has to be in my routine कि I need to provide 2 hours or at least 1 hour a day to that skill, that practice, or to that subject, in terms to improvise कि actually I am liking this subject or not, and through that practice, through that consistency, we got this sense of stability, we got this sense of assurity that yes, either we have the
skills, or that I am actually liking the subject and I want to go forward and go towards it, or I am not liking it और नहीं काम करेगा, नहीं चल रहा है, so drop it and then switch to the next better option. So that is how a consistent routine or maintaining a routine is helpful for you to get your mental well-being boosted. Then next tip is, अच्छा नहीं लगेगा आपको सुनने में, बट इट इज एक्चुअली इम्पैक्टफुल, दैट प्लीज एंड प्लीज रिड्यूस योर स्क्रीन टाइमिंग. I know, considering today's lifestyle and everything, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड है, which ultimately made us to increase our screen time or spending more time on screen. But you have to see a secondary aspect on this also, because सिर्फ virtually किसी चीज़ का experience not will be helpful for you to attain a holistic experience. So if you are spending your more time on screens, especially like if अगर हम सिर्फ specifically summer vacations की बात करें, so we have more time, हमारे पास एक ये बहुत ही एक leisure time होता है to spend on ourselves completely, to spend on our family completely. But what we usually ended up doing is all time on phone. Either we are scrolling on Instagram or we are doing games and everything. We usually ended up on screen only. Or if not this, we watch movies or web series. Binge watching में हम इतना घुस जाते हैं that we hardly feels कि अच्छा ओके बाहर भी जाना है, एक सोशल इंटरेक्शन या दोस्तों के साथ भी मिलना है, until और unless आपको कोई पोक नहीं करता है सामने से that you need to go outside. So we prefer to stay on screen if there is no one to focus on कि अच्छा ठीक है जाइए बाहर जाओ, एक social interaction you have to build. So for maintaining that, for maintaining your emotional well-being, for the well productive cognitive functioning, thought functioning, you need to slow down or reduce your screen timing. This is especially for the students जो summer break में हैं अपने already, and all they doing is throughout the day either on TV और सिर्फ phone पर. And I know ये एक बहुत ही major concern, एक major headache है for the parents, for the guardians also, that how to stay our children away from screen, because majorly they are spending on their time on screen only. They hardly prefer to even interact with their parents. A study published in the Journal of Adolescent Health, which states that reducing screen time can improve sleep quality and mood. So we usually come across with this concern or with this issue that नींद नहीं आती है. अब in majorly in class 12th students और class 11th students कि रात हम तो मैम 3 बजे सोए थे, सुबह 4 बजे सोए थे, और देन फॉर दी स्कूल 6 बजे उठना होता है, 6:30 बजे उठना होता है, स्कूल में नींद आती है, स्टडी मैनेज नहीं हो रही है, काम ठीक से किया नहीं जाता है, आई मीन पेंडिंग वर्क इतना हमारा जा रहा है.
So if we look into that कि chain of हमारे experiences यहाँ पर है, and origin will be there, will be another cause, another reason for this, not maintaining, not able to maintain their academic work pressure, but usually and जो majorly कंसर्न और जो रीजन निकल के आता है, दैट इज योर यूजेज ऑफ फोन. बिकॉज स्कूल होमवर्क के लिए हम फोन लेकर बैठते हैं टू सर्च समथिंग ऑन गूगल और टू टेक हेल्प फॉर गूगल, बट वट वी जेन्युइनली एंडेड अप, आइदर हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं or we indulge in chatting with friends. Yes sir. So after reducing your tip number 3, after reducing your screen time, we the next step will be outdoor, increase your outdoor activities. And yes sir, as you mentioned, it actually help us in very different ways. Like for outdoor activities, yes, it includes garden or playground, badminton court, basketball court, is that we have chance to enjoy nature, plant trees, birds, or have an opportunity to experience team spirit and enjoy various aspects of the games we are playing, along with developing a healthy peer relationships, healthy social relationships. Tip number 4 में we have outdoor activities. So to boost your mental health, you need to go outdoor. I know I am the only person I am saying कि because of extreme heat and temperature, we are not able to go outside much in this year summer break, but we have few time gaps also. Like early morning we can go 5 to 6:30, we have very wonderful time in morning, and then evening after 6:30 or in between 6:30 to 7 we can go in the evening for outdoor activities. So in outdoor activities we have the chance to enjoy or to get the experience of natural plants, trees, birds, everything, along with experiencing team spirit, enjoy various aspects of the game we are playing. We are able to develop better peer relationships there. We are able to develop better social skills there. We got the chance to develop better relationship with our siblings. If for example I don't want to play with other peers or other individual of my age, then with my sibling I can go outdoor to play, and this will increase my relationship with my peer also. So टिप से एक टिप मैं अगर आपको एक और दूं, सो इफ बिकॉज स्कूल स्टूडेंट्स में इन दैट एडोलेसेंट एज ग्रुप में वी यूजुअली केम अक्रॉस विद दिस कंसर्न दैट भाई बहन के साथ बहुत झगड़ा होता है. जो एल्डर सिबलिंग है बहुत गुस्सा करता है, या जो यंगर सिबलिंग है बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, बात नहीं मानता है, बहुत नोटोरियस है. सो वी कैन utilize this summer break or this time to develop our healthy and very beautiful relationship with our siblings also. We can address through playing outdoor with them, we can address our topics with our concerns to them. That for example, if
मैं अपने सिबलिंग के साथ इफ आई हैड अ फाइट लास्ट नाइट and I am not feeling right after that and I want to solve that fight and I did not got the chance कि घर पर बैठकर मैं कैसे बात करूँ, एक बहुत अजीब awkwardness सी we usually feel it right because भाई बहन है, उनको बिठा के हम उनको अलग से एड्रेस करेंगे तो इट विल मेक अस फील कि अरे कोई आउटसाइडर थोड़ी ना, उससे हम ऐसे बात करेंगे. बट एड्रेस करना भी ज़रूरी है बिकॉज देन ऑल्सो इट नॉट मेक अस फील राइट. सो वी कैन यूटिलाइज आउटडोर एक्टिविटी फॉर दैट ऑल्सो. Then we can practice some mindfulness and relaxation techniques to calm ourselves down for as I mentioned it earlier also कि in summers we usually experience irritability, increase in anger, aggression we experience in summers. So to calm our anxiety, to calm our anxious behavior down or to reduce it, we can practice mindfulness and relaxation techniques. Then we can set goals. Now what happens while like why I'm including setting goals in tips है ना, बिकॉज बहुत ही एक बहुत जर्नल सी चीज़ है कि गोल सेटअप करना, हाउ इट विल इंक्रीज आवर मेंटल हेल्थ और हाउ इट विल बूस्ट आवर मेंटल हेल्थ. बट there is a research by American Journal of Lifestyle Medicine which suggests that goal setting can improve mental health and motivation. While setting goal, it is provide a sense of purpose to us. Usually what happens, summer break ठीक है, एक बहुत ही फ्री टाइम, एक बहुत अच्छा टाइम हमको मिलता है ना. यूजुअली स्टूडेंट लाइफ में वी गॉट दिस टाइम. बट एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद क्या होता है, इफ वी आर नॉट इन्वॉल्विंग और इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज, इन अदर एक्टिविटीज, देन व्हाट वी स्टार्ट फीलिंग वेरी बोर्ड है ना, कि कुछ करने को नहीं है, अरे क्या पूरे दिन बोर होते हैं एंड एवरीथिंग. सो सेटिंग गोल विल हेल्प यू टू इम्प्रूव उस वाली स्टेट से कि एक गोल आप सेट कीजिए. एंड इफ आई एम सेइंग सेटिंग गोल, देन इट इज नॉट एट ऑल इंक्लूड कि यू हैव टू सेट अ गोल कि ओ ये चीज हम कुछ बड़ा करना है या नो. यू कैन सेट अ गोल डे वाइज भी नहीं, देन आवर वाइज यू कैन स्प्लिट योर डे इन 2 हाफ राइट, कि फर्स्ट हाफ में मेरा गोल ये रहेगा एंड whatever activities, whatever plans और whatever reading आपको अच्छी लगती है, आपको कुछ fun time activity करनी है, आपको कुछ relaxation techniques, relaxation time उसमें निकालना है, तो आप वो चीज़ निकालो. Then in second half I will do these things. Then in small portion also आप अपने goals set कर सकते हो, so that एक sense of purpose that I have something to अचीव, टू डू, मुझे ये करना है, या फिर आई हैव समथिंग टू प्रोवाइड, एक इमोशनली या फिर थॉट्स को फीड करने के लिए यू गॉट सम एक्स्ट्रा और सम प्रोडक्टिव फूड है ना. बिकॉज अगर हमारे पास कुछ प्रोडक्टिव फूड हमारे थॉट्स को फीड करने के लिए नहीं होता है, देन व्हाट इट यूजुअली डू, it starts creating अपने खुद के thoughts. And I would love to know from my like who जितने भी लोग they are listening me and they are paying attention to what I'm saying कि what are you thinking about it or what do you feel about it, कि जब हम खाली होते हैं राइट, खाली एज इन कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, वी आर नॉट मूविंग फिजिकली और इवन मेंटली भी हमारे पास प्रोसेस करने के लिए कुछ प्रोडक्टिव या कुछ वर्क वाली चीज़ नहीं है. देन व्हाट यूजुअली हैपन्स, एक
थोड़े टाइम के बाद आर ब्रेन, आर थॉट्स, हम कुछ ऐसे थॉट्स अपने आप जनरेट होने लगते हैं. वी यूज टू गो इन सच थॉट्स जहां पर ब्रेन अपने आप को इंडल्ज रखना शुरू कर देता है. कहाँ से भी कुछ भी, कोई भी पुरानी चीज उठाकर वो हमारे दिमाग में आती है, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, उस पर और सोचना 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 सोचना, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. ये चीज चलती रहती है, ये रुकती नहीं है. ये होता क्यों है? ये इसी वजह से होता है, बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडिंग सम प्रोडक्टिव फूड टू आवर ब्रेन, टू आवर थॉट्स, टू फीड इट. वो अपना खुद ही एक रॉ मटेरियल लाता है, उसको पकाता है, एंड इट स्टार्ट कंज्यूमिंग इट. एंड वो रॉ मटेरियल क्या होता है? हमारे कुछ पुराने प्रीवियस कोई भी गुड और बैड इवेंट्स और इंसिडेंट्स, एंड उसको पकाना, सोचना शुरू कर देना, एंड देन उसको वो फीड करता है. और फीड करने का रिजल्ट क्या आता है? वी स्टार्ट फीलिंग वेरी सैड, वेरी बैड, बिना किसी पर्पस के. So setting goals will help you attain, will help you to इस सिचुएशन से, इस सेल्फ फीडिंग वाले फेज से, इट विल हेल्प यू टू ओवरकम, so that it will ultimately will make you able to maintain your mental well-being in a very good and positive state. Then last but not least is seek support. Seek support is if even after whatever I am suggesting you in tips, whatever tips I am giving you till now, even after doing all these or even doing extra of some of these, अगर आपको फिर भी नहीं अच्छा महसूस होता है, अगर if you are not feeling well, उसके बाद भी you are not thinking very positively, very productively, then please do not hesitate in asking for the support. And if I am saying support, seek support or asking for support, it not mean it doesn't mean that you will go to someone and say ki please help me and I need support and everything. No, just simply if you are not willing to say these like this, then you can simply go to your close ones, go to your friends and just ask them to please that I am not feeling good, will you hear me out, क्या मेरे साथ थोड़ी देर बात कर लो या फिर मुझे सुन लो. बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, जरूरी नहीं है हर एक चीज के ऊपर वी वांट सॉल्यूशन. समटाइम्स विद मेयर डिस्कशंस वी फील गुड, और समटाइम्स वी जस्ट वांट टू वेंट आउट हमारे अंदर की जो चीजें होती है. एंड नाउ व्हाट हैपेंस, समर ब्रेक में, समर वेकेशंस में क्या होता है कि जो 11th-12th स्टूडेंट्स हैं, है ना, they usually feel this gap between their parents कि बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने इमोशंस या व्हाट जो एक्चुअली फील होता है, या फिर मेरे स्पेस पे वट एवर वी आर फीलिंग ऑन आवर स्पेस, हमारे पेरेंट्स उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. एंड देन दिस विल लीड टू अ गैप और डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स. सो व्हाट you can do, you can utilize this your summer break. I know वैसे 11th-12th स्टूडेंट्स को कम ही डेज का ब्रेक मिलता है, बट यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज दिस ब्रेक एक अपने उस बॉन्ड को डेवलप करने के लिए टू योर फैमिली, है ना. एंड सिट विद देम, ट्राई टू टॉक टू देम. एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, यू हैव आई गेस 10 days. एक दिन आप ट्राई करो, 2 दिन ट्राई करो, तीसरे दिन ट्राई करो. एंड दिस इज, डोंट टेक इट एज अ टास्क,
है ना, टास्क लेकर हम इस चीज को नहीं चलेंगे कि ओ आज तो मम्मी से बात करनी है, ओ आज तो मम्मी से कुछ शेयर करना है. नो, बिकॉज यू आर बिकॉज आपको भी नहीं पता है दैट इन व्हाट इमोशनल और मेंटल स्टेट आपकी मदर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, राइट. सो डोंट टेक इट एज अ टास्क कि हम उनके साथ बैठेंगे और आज तो कुछ शेयर ही करके मानेंगे, आज तो मम्मी को बता के ही मानेंगे कि मम्मी मुझे ऐसा फील होता है या मैं ऐसे हूं. नो, जस्ट सिट विद देम, आस्क देम दैट आर यू इन अ राइट स्टेट, कि मैं अगर आपसे कुछ बात करूं तो आप वो सुनना चाहते हो. इफ दे आर रिस्पॉन्डिंग यू, है ना, इन योर फेवरेबल आंसर्स, इन योर फेवरेबल रिस्पॉन्सेज, then continue with your conversations. if not, then ask them, उनसे भी पूछ लो कि क्या परेशानी है, उनकी भी थोड़ी सी सुन लो, है ना. then seek support, provide support. it will work both ways. हो सकता है उनकी कुछ चीज़ों को सुनकर you will get your answers ultimately. So you can utilize your this summer break or summer time in in a very magical or very productive way. So don't just spend it on like कि सिर्फ फोन में पूरा टाइम इंस्टा पे रील्स और इंस्टा पे पोस्ट करना है या कुछ भी, या वीडियो गेम्स में ही हमको लगे रहना. नो, ट्राई टू एक्सप्लोर. because what happen is कि we have 5 senses, है ना, and if we keep on feeding only one sense, only eyes, if we keep on feeding only eyes or only ears, then जो other 5 senses हैं they will not feel much entertained. then वो complete एक sense of pleasure you will not get, and it will ultimately lead you to not feeling good enough about yourself and about any certain things. So if we have 5 senses, then better to utilize all of your 5 senses so that you can get that sense of livelity, that sense of aliveness, that yes, you are doing something, you are providing something. So, and for that you have plenty number of activities and plenty number of tips, which few of them I am sharing with you. For example, go outside, है ना, stay in touch with nature, eat clean, stay physically active, write, journaling भी I must I request to every student that you should have developed this habit of journaling. If you are developing it from your this student age group, in this age group, then आधी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, हो सकती है. आई एम सेइंग दिस. स्टार्ट राइटिंग इट डाउन फ्रॉम टुडे onwards, that if you are not feeling good, what are you going to do in upcoming time, then for the next टाइम पीरियड के लिए आपका क्या चीजें होने वाली हैं, और whatever happened in a day, write it down, everything. So adding journal can also help you to boost your mental well-being or your emotional wellness in summer break. Also adding one more point is क्योंकि काफ़ी हमको एक ब्रेक मिला है ना, तो अगर हम एक जैसे आई इंक्लूड दिस कि रूटीन सेटअप में, इफ़ वी सेट द रूटीन, है ना, एक कंसिस्टेंट रूटीन हम इवन समर ब्रेक्स में भी लेकर चलते हैं. सो वी मेंटेन some portions ki this time is for fun activities, this time is for using our screen time, phone time, then this will be for this task, this will be for this task. And if we have students or we have like students, if you are seeing this school students, then और जो वीडियो जो
सॉरी, जो व्लॉगिंग में या जो यूट्यूब कंटेंट में, जो इंस्टाग्राम कंटेंट में दे आर एक्टिव और दे आर विलिंग टू बी इन दिस एरिया, कि हमको एक रील्स वाले एस्पेक्ट में या यूट्यूब के कंटेंट वाले एस्पेक्ट में, व्लॉगिंग वाले एस्पेक्ट में वी वांट टू ग्रो, then you can utilize your this time for writing your content also, because then school times में क्या होगा, your 7 to 2:30 आपका एक टाइम पूरा पैक है, उसके बाद आपकी ट्यूशंस हैं, आपकी क्लासेस हैं एंड एवरीथिंग है. यू हार्डली गॉट टाइम कि या तो आप अपने कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे या फिर आप अपने स्कूल के काम को प्रिपेयर करेंगे. सो बेटर टू यूज योर दिस टाइम फॉर कंटेंट प्रिपरेशन ऑल्सो. Then again it will provide you this sense of purpose that you are doing. So if you notice that ki whatever tips I shared with you, these all are interlinked, है ना. आप एक चीज करोगे, it will serve to the next thing. If you are going to the next tip, it will serve some other tip also. So start doing on 2 टिप्स से, एंड देन डू लेट मी नो कि कितना वो यूजफुल आपके लिए रहा है फॉर दिस समर ब्रेक, या इन इस समर्स में आपको मेंटली आपको एक वेल बीइंग और फिट रखने के लिए, हाउ हेल्पफुल इट विल बी. Yes sir, in journal we can start by today by writing your experiences, that what made you happy. Provide yourself few topics रोज के लिए, जैसे as sir has mentioned that what made you happy. Write what made you happy at the end of the day today, कि आज मुझे किन चीज़ों ने अच्छा फील कराया. मेक इट अ परमानेंट टॉपिक कि मैं अपने डे एंड में कुछ 5 चीज़ें इंक्लूड करके ये लिखनी ही है, या मुझे इस पर खुद को एक इंसाइट दिलाना ही है, दैट दीज आर सम थिंग्स विच हैपन टुडे विद मी दैट मेड मी फील हैप्पी. इट विल इंक्रीज योर habit of gratitude. It will develop to have this habit of gratitude. Also for the students of the age group of 17, 18 or 16, you can better utilize this time to maintain or to develop a very healthy relationship with your family, with your siblings. Also if कोई conflicts भी if अगर generate है, you can take this time to resolve those conflicts. And if any student, even after applying all these steps and everything, they are not feeling well, or they do not feel any improvement, you can connect to us. We have this tele-counseling service available also. And along with this we have area for you to come and plan your outdoor activities with us. To utilize your summer breaks, you can come to our center. We have activities, summer camp, differently planned summer camps activities for students of age groups, middle wing students and senior wing students. For the parents who wants to bring their kids of primary wing, they can come along with their children.
If we have any questions or any concerns regarding what I spoke to you abhi, or anything you want to ask or share, you can please write it down on the comments and I'll try कि हम चीज़ें cover up करें considering time limits. And thank you so much, Anil Girotra sir, for make this live session interactive from your end too, by putting your inputs on every pointers I have shared. Because as we are moving to close this session, if we have any questions or concerns you want to ask, you can ask here also, or you can DM us also. We have our website www.uvct.in. You can write down to us on by visiting our website also. Thank you so much, sir. So we have this one questions. What are some creative hobbies I can try out to keep my mind engaged? Okay, this question is asked by a student that क्या क्रिएटिव हॉबीज वो कर सकते हैं अपने माइंड को एंगेज करने के लिए इन दिस समर ब्रेक. सो आई एम सजेस्टिंग यू गो विद वट एवर एक्टिविटी यू लाइक टू डू. एंड इफ यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या एक्टिविटीज पसंद है, देन स्टार्ट विद ड्रॉइंग समथिंग. टेक अ ब्लैंक शीट एंड ड्रॉ वट एवर यू फील लाइक. अगर आपको सिर्फ पेन ही चलाना है उस पर, डू इट. देन यू कैन गो फॉर DIY if you are aware of this. DIY things and DIY products आजकल बहुत, we have this separate store also इस चीज़ के लिए कि आप कुछ creatively you can make कोई भी waste product से you can make a very any instrument or anything which can be utilized. You can do that, or try painting or writing something. You can also learn new languages. पहले क्या होता था कि सेटअप्स थे, सर्टेन सेटअप्स ही थे हमारे पास टू लर्न सर्टेन थिंग्स, है ना. ड्राइंग सीखनी है तो दिस सेंटर गो, एंड इफ आई वांट टू फॉर एग्जांपल लर्न न्यू लैंग्वेज, देन दीज आर सम. बट फॉर अगर सिर्फ एक लेजर टाइम स्पेंड करने के लिए आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू, देन वी हैव प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल है, रिसोर्सेज, है ना. यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो. Cooking, I personally feel cooking is the best creative activity or hobby one can develop if you are like it only, and you are
एट द सेफ एज कि आप वो आप कुकिंग कर सकते हो सेफली, बिकॉज दिस इज समथिंग वो बहुत ही इनोवेटिव आपका हो जाता है, सेम टाइम पे क्रिएटिवनेस आपकी हो जाती है उसमें, एंड इट विल provide senses to your complete five senses, taste, eyes, nose, smell, सारी चीज़ों में it serves your all five senses. I personally like cooking. Cooking is my hobby actually, so that is why I'm saying कि cooking, you can go for cooking. Okay, so we have this question from parents, one of the parent. How can I help my child maintain a positive mindset during the summer vacation? Okay, so this question is one of our follower. Ma'am is asking कि उनके चाइल्ड को शी वॉन्ट्स कि वो पॉजिटिव माइंडसेट उनका अपने बच्चे में कैसे डेवलप करा सकती हैं इस समर वेकेशन में. सो फॉर डेवलपिंग अ माइंडसेट यू नीड टू एक्चुअली सिट विद योर चाइल्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग दिस टू एंड टू द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, आप अपने मम्मी पापा को टाइम दो, आप उनके साथ एक कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड करो इस समर ब्रेक में. सिमिलर गोज फॉर पेरेंट्स ऑल्सो. एंड in one of the recent visit to our school, our chairman sir, respected Dr. Rao sir, has mentioned this in his speech कि बच्चे को आपको टाइम देना होता है. इट इज नॉट लाइक कि उसने आपसे कुछ क्वेश्चन किया एंड यू जस्ट आंसर इट, उसने फिर से आपको कुछ बताया एंड यू जस्ट ओके एडमिट इट. यू नीड टू प्रोवाइड अ very good amount of attention to your child in terms to develop a sense of connectivity with them. If you just keep on answering in yes or no to their child only questions pe, then how can it will create a bond between two of you? So for that you need to provide a good amount of time with your child, and provide them the assurance. उनको रीअश्योर कीजिए, उनको एक सेंस ऑफ एश्योरेंस उनको बार बार दिलाइए दैट यू आर देयर, यू आर हेयर टू लिसन टू देम, टू अंडरस्टैंड देम, नॉट जस्ट टू आंसर देम और क्वेश्चन देम, to hear them out also. So in terms to build something in your child, you need to sit with them, listen to them कि वो बताना क्या चाह रहा है एक्चुअली में. Because sometime what happens is कि बच्चा गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा, है ना. ऑल ऑफ 9th से 10th के बीच का ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज होता है इन स्टूडेंट्स. एंड मेजर कंसर्न्स जो पेरेंट्स की तरफ से आते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन बच्चा बहुत गुस्सा करने लगा है, ये तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, ठीक से सीधे मुंह बात भी नहीं करता है, पता नहीं क्या हो गया है इसको. और मे बी बिकॉज ऑफ पीयर इन्फ्लुएंस और वट एवर दे थिंक कि XYZ रीजन्स की वजह से. बट समटाइम्स क्या होता है कि अग्रेशन जो बच्चा दिखा रहा है आपको, वो एक सेकेंडरी इमोशन होता है टू कवर अप द प्राइमरी इमोशन. क्योंकि बच्चे को प्राइमरी इमोशन एक्सप्रेस करना शायद आता ही नहीं है, या फिर उसको हेजिटेशन फील होती है उस प्राइमरी इमोशन को एक्सप्रेस करने में. फॉर एग्जाम्पल, if I am feeling very hurt, if a child is feeling very hurt है ना, so and I am not vocal to my parents, मैंने कभी बैठ के बातें की नहीं है, तो
वट आई यूज टू डू, मैं अपने उस हर्टफुल इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए ना कुछ सेकेंडरी इमोशंस अडेप्ट कर लूंगी, एंड दिस विल हैपन अपने आप से. डोंट थिंक कि ये बच्चा खुद से कहीं से सीखता है, नो. सो उस एक हर्ट वाली फीलिंग को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को, इवन अपने पेरेंट्स को. सो व्हाट हैपेंड इज कि इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ anger, a sense of agitation in me, which comes out in a way of aggression. कि वो aggression की फॉर्म में फिर पेरेंट्स की तरफ निकलता है. एंड बिकॉज हम अपने बच्चे के साथ बैठे नहीं हैं, उसे अच्छी तरह बात नहीं हुई है, सो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में क्या चीजें हैं. बिकॉज so for developing a positive mindset or whatever mindset or behavior in your child you feel right for him or her, please sit with them and listen to them कि बोलना क्या चाहता है बच्चा. don't go for उनके primary emotional expression पर. listen to them कि जो primary उनका expression है, reaction है, उसके पीछे का reason, किस रीजन से, किस भाव से वो बच्चा बोल रहा है और क्या बताना चाह रहा है. फाइन. What resources are available for parents to support their child's mental health at home? सो व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज, आज के टाइम पे बहुत रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है टू सपोर्ट योर चाइल्ड, इवन इफ लाइक इफ यू डोंट वांट टू गो आउटसाइड और आपको ज़्यादा नहीं नॉलेज है सेंटर्स और उनकी, सो ऑनलाइन भी आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे. वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग टेली काउंसलिंग टू दी स्टूडेंट्स, टू दी पेरेंट्स ऑल्सो, एंड we have our websites also. You can connect to us. along with that गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स आज के टाइम पे अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल टेलीमानस है, यू कैन श्योरली go with that also in terms to get support for your child's mental health. So besides that, if we have any questions or any queries, please ask. We are running actually short of time, and later on if you want to connect with us, we have our complete website. I have mentioned it, www.uvct.in. we have 24/7 active calling number also. You can you can call to us in any case of emergency. Our center is based on Dwarka sector 22 in Delhi. You can come and visit us for the counseling, for career guidance, for any psychological support you want. Okay, so I'm considering we are done for today's session. This is a thank you so much, sir, for sharing the link of the video. We'll put it on the page and I'm sure ki it will get used positively. So thank you so much for joining me for this discussion on homebound happiness, mental health boosters for summers. We are open, I am open for your suggestion, for your feedback. If you want me to share more insight on such topics, on relatable topics, you can DM us your suggestions, and I hope these tips can inspire you to make positive changes in your daily life or in your mental health wellness in this summer. So
Taking care of your mental health is essential. Please stay active, maintain a routine, set goals, write down a journal every day, every night. Develop some relaxation habits, for example, reading books, meditation, yoga, or breathing techniques. Please limit down students or even uh, elders also. Please limit down your screen time and pursue hobbies as much as you can. Also connect with others. Please develop a very healthy and positive social life. Interact with people, go outside, provide provide a healthy sense to all your five senses, so that it will lead you to make you feel more alive and healthy. Eat healthy, stay healthy. Please get outside, outdoors, develop outdoor activities, but on the safe are, considering this increasing temperature and heatness of the weather. Seek support whenever needed. Please have a wonderful summer and take care of yourself. Thank you so much.